So, dear friends, how are you? चलिए चलते हैं मैथमेटिक्स के सफ़र में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे एंड टुडे वी आर टेकिंग वन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक from 8th class, either CBSE board or other boards, and the very good topic is this a square and a cube. इस टॉपिक को अपन लेके चलते हैं और जरा देखें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज ए स्क्वायर एंड व्हाट इज ए स्क्वायर रूट। सिमिलरली क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये चार जानकारी पहले अपन लेंगे, देन वी विल गेट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नंबर्स रिलेटेड वेदर इट इज ए स्क्वायर, वेदर इट इज नॉट ए स्क्वायर। ये सब जानकारी अपन इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं देन यू जस्ट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल सो दैट यू कैन गेट सम बेनिफिट related with the mathematics. Okay, let us start this topic. See here, a square and a cube. That this topic is from 8th class, and you just see. First of all, let us discuss what you mean by a square. Square means what? Any number is multiplied with itself. ये जनरल डेफिनेशन किसी भी स्क्वायर नंबर की है। व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग ए नंबर विद इटसेल्फ देन फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड इट्स स्क्वायर। सबसे पहले ये जानकारी आप बना लें। इन जनरल वी विल से दैट n square that is equal to n multiplied n is a square number. Now you just see here, 1 square, what we are getting, 1 square that is 1 multiplied 1, that is 1, 2 square that is 2 multiplied 2 is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square that is 25, 6 square that is 6 multiplied 6 is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81 and 10 square is 100. तो ये कुछ स्क्वायर्स हैं। आई हैव टेकन सम ऑफ द स्क्वायर्स राइट फ्रॉम, वी हैव स्टार्टेड दिस numbers right from 1 to this 10 and we have taken all the squares of the number. So dear friends, dear student, जरा अब हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन इसके रिलेशन में अपन बात करेंगे। सी 1 स्क्वायर जो आपने लिया, इसका जो यूनिट प्लेस है व्हाट इज दैट? सी हियर, दैट इज 1. 2 square, the unit place in case of 2, that is 4. 3 square, what is that? 9. 4, that is 6. 5, that is again 5. 6, that is again 6. 7 square, again we are taking this 9. 8 square is 4. And 9 square, the unit place in this square, that is 81, means 1. And 10 square, when we are getting 0 here, and again we are getting 0. So what is your observation in the square of the numbers? We are getting this 0, 1, 4, 5, 6 and 9. You just see, except these numbers, we are taking only these numbers 1, 4, 9, 6 here, 5 here, again 6, 9, 4, 1 and 0. So we are taking 0, 1, 4, 5, 6 and 9. What does it mean? जरा सोचिए कि इसमें जब ये नंबर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्क्वायर नंबर्स हम लोग निकालेंगे, आई हैव टेकन ओनली 10 नंबर्स एंड वी आर गेटिंग द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स। बाकी ग्रेटर देन 10 के नंबर्स से हम लोग देखेंगे, सो ऑलवेज यू विल गेट द यूनिट प्लेस 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। पहली ऑब्जर्वेशन आप अपने अच्छे से माइंड में रख लीजिए कि अगर कोई स्क्वायर नंबर है तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा इन्हीं नंबर्स में से आना चाहिए। नंबर 1. नाउ सी, whether it is a square, then you will say that will definitely a square. आपको इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि whether you will be given a number and you will be asked
that whether it is a square number or not. What will you, how to get the answer 0, 1, 4, 5, 6 and 9? अगर इनमें से कोई यूनिट प्लेस में नंबर आ रहा है, then you just say that it is a perfect square, otherwise it is not a perfect square. So not a perfect square for what? When we are getting a unit place, that is either 2, 3, 7 or 8. 2, 3, 7, 8 के आने पर जब भी यूनिट प्लेस में कोई नंबर आता है, then we will say that these are the numbers you are given with the unit place 2, 3, 7, 8 are not a square number. तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग कैसे कैसे ऑब्जर्व करके इसको निकालते हैं. So dear friend, first of all, you just learn the rule for a square number. If we are getting 0, 1, 4, 5, 6, 9, that will be a perfect square. And in case of 2, 3, 7, 8 as a unit place, then you are not getting any perfect square. Okay, see. Now, there will be another topic in the this subtopic will be here. That square root, what is a square root? Get the square root of this number. When we are taking this 1 square, that is 1 multiplied 1, that is 1. Okay, so 1 is the square of 1. 2 square, that is 2 multiplied 2, that is equal to 4. We are getting the square of the number, that is 4. So what will you say? ये 4 number आया कहाँ से है? जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट नाउ, देन this 2 is called the square root of that. Square root means what? ये 4 number, how to get this 4 number when we are multiplying 2 by 2? Okay, so 2 is called the square root and 4 is called the square number. That's all. Similarly, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 9 का स्क्वायर रूट कितना है? What will be the square root of 9? We will write it as, we will represent 9 as 3 multiplied 3, and we will say that 3 is the square root of 9. Okay, dear friends, जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जो इसमें to get the square root of number, how to get this perfect square, find a perfect square by subtracting continuous odd number. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, आप देखिए और नंबर्स क्या होते हैं. 1, 3, 5, 7, okay, 9 dash dash. These are number and which are called odd. Why it is odd? Because these numbers are not divisible by 2. सिंपल सी थ्योरी है. जो 2 से डिवाइड करने वाला नंबर है दैट इज कॉल्ड इवन, एंड जो 2 से डिविजिबल नहीं है देन दैट all those numbers are called odd numbers. Okay, see, अब अपन देखते हैं कि कोई नंबर, let you take this number is 25. How to get the square root of this one? First of all, we will take this odd number को, जो consecutive odd numbers है उनको subtract करते चले जाइए. So I am giving the method to get the square root of a number which is a perfect square. Perfect square तो है लेकिन उसको हम लोग square root निकालना है. How to get it? See here, 25 minus 1. First of all, I will take this is 24. Then 24 is the result, and next odd number जो consecutive number है that is 3. Odd ही minus करना है. Don't subtract the even number. 24 minus 3, that is 21. Okay, see that. Then 21 minus next number is 5. What I am getting, this is 5. Then you are getting this is 16. Okay, see that. Now 16 minus next odd number is 7. What I am getting, that is equal to 9. So dear students, see how many times you have subtracted 1, 2, 3 and 4 times. Okay, see, now the result is 9 and we are getting the subtraction of next consecutive number is 9. 9 minus 9 is 0. So what is the process for getting the perfect square root of the number?
So we will subtract the continuous odd number from the given number, and up to which stage, up to when you are getting the zero, तब तक आपको इसको कंटिन्यूस और नंबर को सब्ट्रैक्ट करते चले जाना है. So how many times I have subtracted 1, 2, 3, 4 and 5. So your answer will be 25. Square root of 25, that will be 5. So very simple idea is there. आपको जो भी नंबर दिया है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूस और नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, और जितनी बार आप घटाते चले जाएंगे, कब तक चलना है, जब तक कि आपको जीरो नहीं मिल जाए. जब आपको जीरो मिल गया, देन आप गिन लीजिए कि कितनी बार आपने घटाया, द नंबर ऑफ subtraction, how many times. So that will be your answer in this case. So dear student, I will take one more question to so that you will understand the concept of this square root. See here, I will take this 36. Okay, so what will be the square root of 36? First of all, I will subtract this minus 1. What I am getting, that is 35. 35, then minus 3, minus करिए, next odd number is 3. So what I am getting, that is 32. Okay, 32 minus, what is next odd number, that is 5 को minus करिए, what I am getting, 32 minus 5, that is 27. Okay, see, then 27 minus, that is 7, इसको minus करिए, so what I am getting, that is 20. Then 20 minus, what is the next number, that is 9. Okay, 20 minus 9, what I am getting, what will be the result here, that is 11. Now see, after 9 there is next odd number is 11. So I will subtract the resultant number is 11 minus 11 to get it 0. आप देखिए 36 से स्टार्ट किया हमने, कंटिन्यूस और नंबर को माइनस करते चले गए, कब तक करना है, जब तक कि आपको जीरो नहीं मिल जाए. सो यू विल टेक दिस वन, दैट इज कॉल्ड जीरो. सो सी, now you count the number of subtractions, how many times you have subtracted the given number, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 times. So your answer 36, square root of 36 is equal to 6. So dear friend, this will be the answer in this case. So dear friend, थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ेंगे इसमें, और जरा आप लोग एक और पॉइंट पर अपन बात करेंगे. व्हाट इज दैट what is a cube? Now I will discuss this cube number. Cube. So to get the square, we have multiplied a number with itself. So if we are multiplying a number 3 times with itself, then to get it equal to cube. Now see, 1 cube, 1 power 3 लिखेंगे, that is a representation of cubic number. 1 cube, that is 1 multiplied 1 multiplied 1. I will take it equal to 1. Okay, see, again, now this number, next number is 2 cube. What is 2 cube? 2 multiplied 2 multiplied 2. 2 multiplied 2 is 4, 2s are 8. What I am getting? This is 8. See here, dear student, 3 cube. What is that? 3 multiplied 3 multiplied 3. 3s are 9, 3s are 27. I am getting. Now see, 4 cube. What is it? That will be equal to 4 multiplied 4 multiplied 4 is 4, 4 ja 16, 4 ja 64. 64 I am getting this. So dear friend, get the value of 5 cube. What is that? 5, 5, 5. Multiply it. 5 5s are 25, 5s are 125. Okay. So I will take this 6 cube. What is it? See here.
that is 6 multiplied 6 multiplied 6. So dear friends, what is it? 6 6 are 36 and 36 multiplied 6 कर दीजिए. So you will take, I think, 216. Check it. 36 multiplied 6. If you are having doubt, then you just multiply it. 6 6 are 36, 6 3 are 18, 18 and 3 21. Okay. Now 7 cube. I will take this 7, 7 and 7. So 7 7 are 49 and I will take it as equal to this. So what is it? 63 and this is 28 and this is I think 343. Check it. So this will be 343. Now get the value of 8 cube, that is 8 8 and 8. 8 8 is 64 multiplied 8. I will take this 32 and 6 8 is 48 and 3, that is 51. So dear student, this the answer will be 512. Similarly, I will take this 9 cube will be 9 multiplied 9 multiplied 9. What is it? This is 81. 81 multiplied 9. You just take this 9. 7 2. You are taking this 7 to 9. So dear friends, 7 to 9 will be the cube of the number 9. Okay. Now the last number is 10. I will take this 10 multiply 10 multiply 10. What is it? This is 1000. So what will be your observation in the cubic numbers? What will be the unit place? 1, 8, 7, 4, 5, again 6, then 3, then 2, and 9, and 0. So these will be the unit place in the cubic numbers. Again, I will repeat it. 1 I have taken here, and 2 I have taken, 3 here, I have taken this 4, 5, then 6, then 7, then you are taking here 8, then finally you are taking this 9 and 0. So all the numbers we are taking from all the digits, right from starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो ये किसी भी क्यूब नंबर में कौन कौन सा यूनिट प्लेस हो सकता है? दीज विल बी द यूनिट प्लेस. तो कोई भी हो सकता है, इसमें से कोई मिसिंग नहीं है. जैसे स्क्वायर के केस में यू जस्ट टेक द डिफरेंस बिटवीन ए स्क्वायर एंड ए क्यूब. स्क्वायर में हमारे पास क्या था कि 0 1 4 एक्सेप्टिंग दीज नंबर्स, इसको छोड़ करके अपने पास नंबर थे. बट इन केस ऑफ ए क्यूब you are taking all the numbers. That's why this will be the characteristics of a cube. Now dear friends, what is cube root? One more, the last topic, a relation with this subtopic, I will take this. What is cube root? Cube root, I will take this cube root. How to get this? See here, 1 is the cube of 1, that's why 1, this one is called the cube root of this one. See, this will be the representation of any number. I will take this. यहाँ पर अपन 3 लिखेंगे. This will be the representation of a cube root. Okay, dear friend. So what will be? आपसे पूछा जाए कि what is the cube root of 8? You will write this too. Cube root of 8, that is equal to 2. Okay, 2. See, then what is cube root of 27, dear friends? What is that? ये अपने पास आ गया 3. Cube root means what? जहां से क्यूब नंबर जनरेट हुआ उसका जो रूट है, what is that? That is 3. Similarly 64 का क्यूब रूट 4 हो गया, then 125 का 5 हो गया, 216 का 6 हो गया, 343 का 7 हो गया, 512 का 8 over, like that you are getting this. So dear student, I think you have understood this concept relation with the square and a cube, and similarly square root and a cube root. So these are the some general reasoning based questions
ऐसे करके आते हैं, इनका बेस बनाइए। और सबसे बड़ी बात ये है कि न्यू पैटर्न का जो भी मैथमेटिक्स है इसमें आपको रीजनिंग बनानी है। आप पूरे टॉपिक को पढ़िए अच्छे से, कॉन्सेप्चुअल आपकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए, एंड देन यू कैन गेट इट वेरी इजीली। सो डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी और क्लास के टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।